Hello, children. How are you doing? I'm sure you're enjoying the season, whichever you are in, whichever place you are right now. Children, have you thought how wonderful it is when it's spring or summers? You can play outside till late evenings. But जब सर्दियाँ आती हैं तो खेलने पे पाबंदी लग जाती है ना? घर भी जल्दी आना पड़ता है, ठंड पड़ गई तो अंदर ही रहना पड़ता है। और अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बर्फ़बारी होती हो, फिर तो पूछियो मत। आज हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे जो बच्चों की इनोसेंस पे है, जिसमें इमेजिनेशन दिखाई गई है और जहाँ थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी पड़ती है। सो लेट्स एंजॉय द स्टोरी लिटिल स्नो सिस्टर। It had been snowing since morning. The children were inside the house with their mother. Betsy and Peter played with all the toys they had. They did not do any homework. Their father had not returned from night duty in cyber cafe. आप ही की तरह दो बच्चे थे, बेट्सी और पीटर। अब क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी तो वो सारा दिन अंदर ही थे और जितना खेल सकते थे खेल लिए, जितने खिलौने थे उनसे वो खेलते रहे, लेकिन उन्होंने होमवर्क नहीं किया। Betsy and Peter had been feeling bored inside. They opened the window. It was afternoon. The snowing had stopped. They cried with joy. Now they could ask Mama for playing outside. अब सारा दिन अंदर बैठे बैठे तो बोर हो चुके थे। Finally, जब बर्फ गिरनी बंद हुई तो उन्होंने सोचा अब हम अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं कि बाहर जाके खेल लें। Mama, can we play in the garden? It is not snowing now. We want to play with snowballs. Yes, you may go out, but don't quarrel. Quarrel here means fight, said their mother, and out they went with a hop, a skip, and jump. The little garden in front of the house had a number of trees and shrubs. They were leafless now and the twigs were covered with snow. Children, here the meaning of shrubs is little plants which are around the trees. जो नन्ही नन्ही झाड़ियाँ होती हैं, छोटी झाड़ियाँ होती हैं पेड़ों के आसपास, उन्हें हम बोलते हैं shrubs. अब जो पेड़ थे इस मौसम में बिल्कुल खाली हो चुके थे। कहीं पे कोई पत्ता नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी बर्फ़बारी जो हुई थी, और जो ट्विग्स थे उन पे भी बर्फ़ जम चुकी थी। ट्विग्स मतलब छोटी छोटी टहनियाँ, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं लकड़ी के पेड़ों में, छोटे छोटे प्लांट्स में, उन्हें कहते हैं ट्विग्स। Betsy, said Peter, let's make a figure out of snow. A little snow girl to run about and play with us all winter. Silly, said Betsy. A snow figure can't run itself like us. We can play with it, but it can't play with us. तो बेट्सी ने कहा, हम एक स्नो फिगर तो बना सकते हैं, हम उसके साथ खेल सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं खेल सकता. It may not, but we will play with it, said Peter. If we make it on a wooden board with wheels, we can move it. सो पीटर ने आइडिया दिया कि अगर हम एक स्नो फिगर व्हील्स के ऊपर बनाएं, एक वुडन प्लेटफॉर्म लें, नीचे पहिए लगा दें, तो हम उसे मूव कर सकते हैं और वो फिगर हमारे साथ कहीं पे भी खेलने जा सकता है. So the children began to make a snow figure. Now, said Betsy, we must find some little shining bits of ice to make the brightness of her eyes. Mama, called Peter, look out and see what a nice little girl we are making. The mother put down her magazine and looked out of the window. Through the dazzle of the sun on the snow, she could just see the snow girl. She was much pleased to see that the children have made a fine snow figure. Her broad smile enhanced the zeal of both the children. अब क्योंकि उनकी मम्मी अंदर थी, जब उन्होंने बाहर देखा तो खिड़की से वो केवल एक बाहर का एक फिगर देख पाए,
उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या नीचे उसके एक प्लेटफॉर्म रखा है कि नहीं, और उन्होंने मुस्कुरा के एक हामी भरी, जिसको देखकर बच्चों में और जोश आ गया. दैट्स व्हाई द वर्ड यूज्ड हियर इज एनहांस द ज़ील. Enhance the zeal of the children. What a nice playmate she will be for us all winter long, said Betsy. Oh yes, cried Peter, and she'll sit down close by me and drink some of my warm milk. तो यहाँ बेट्सी और पीटर जाने क्या क्या इमेजिन करने लगे कि अब ये फिगर, ये गर्ल जो है हमारे साथ ये करेगी वो करेगी. एक पल के लिए भूल गए कि वो तो स्नो की बनी है. Oh no, Peter, said Betsy. Warm milk will do harm to our little snow sister. Little snow people eat nothing but icicles. लेकिन यहाँ बेट्सी को याद आया कि वो तो स्नो की बनी है और कुछ भी गर्म चीज़ ठंडी चीज़ को पिघला देती है. उसने यहाँ तक कहा कि वो हमारी एक स्नो सिस्टर है, अपनी बहन बना दिया. और स्नो पीपल क्या खाते हैं? लिटिल आइसिकल्स. सो आइसिकल्स आर लाइक टाइनी फ्रोजन थिंग्स मेड ऑफ आइस. नाउ लेट अस क्लियर सम स्नो फ्रॉम द वे टू मूव द कार्ट ऑफ आवर सिस्टर, पीटर सेड. द चिल्ड्रन cleared a small path in the garden near the snow figure. They pushed the board with wheels along with the snow girl. उन्होंने उस कार्ट को, उस प्लेटफॉर्म को खींचना शुरू कर दिया. Just then, there came a breeze rattling the window panes. The mother became anxious if the children might get cold. When they both cried out, "Mama, we have finished. Our little snow sister is running about the garden with us." जब इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई, तेज़ हवा चलने लगी कि विंडो पेन्स आपस में टकराने लगे, तो मम्मा को थोड़ी चिंता हुई. और जब उन्होंने देखा तो क्या जवाब मिला कि हमारी स्नो सिस्टर रेडी है और हमारे साथ गार्डन में खेल रही है. द मदर कुड नॉट हियर क्लियरली इन द रैटल ऑफ द पेन्स. अब मम्मा ये बात ठीक से सुन ही नहीं पाई कि उन्होंने स्नो सिस्टर कहा है. शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. The sun had now gone down and she could not see quite clearly. All she could see was a small figure of a girl dressed all in white playing with the children. She called Betsy and whispered, "Darling, what is this girl's name? Does she live nearby?" यहाँ मम्मा ने एक पल के लिए बिलीव किया कि शायद वो किसी आसपास की बच्ची के साथ खेल रही है, तो उन्होंने उसका नाम जानने की कोशिश की. Why, Mama? laughed Betsy. It's our little snow sister. Just then, a flock of snowbirds came down. They flew at once to the snow child, fluttering about her head. Children, here a collective noun has been used. A flock of snowbirds. A flock is used for birds. So these birds came down upon the head of the snow girl. While the mother wondered what to think and what to do, the garden gate was thrown open and the father of Betsy and Peter appeared. He soon noticed the little white stranger. इतने में दोनों बच्चों के पापा भी आ गए. What little girl is this? He asked. Her mother must be crazy to let her go out in this bitter weather wearing only a thin white dress. Now here the father thought that this is a girl from the neighborhood. पापा सोचने लगे आसपास की कोई और बच्ची है जो मेरे बच्चों के साथ खेल रही है, और कैसे पेरेंट्स हैं इतनी ठंड में उसको बस एक पतली सी वाइट ड्रेस पहनाकर बाहर भेज दिया है. ना मदर को ना फादर को किसी को नहीं पता था कि वो एक स्नो गर्ल थी. I don't know, said Betsy's mother. Some neighbor's child, I think. Father, do you not see how it is? Said Betsy. This is our snow figure which Peter and I had made because we wanted a playmate. What nonsense, said the father. Do not make a joke. This little stranger will die in this cold. Bring her into the
parlor and give her a supper of warm milk and bread. I will go out and ask about a lost child. अब पीटर और बेट्सी ने उन्हें पूरी बात बता दी कि वो तो एक स्नो गर्ल है, हमारी प्लेमेट है. तब भी वो इस बात पर यकीन कर ही नहीं पा रहे थे. और पापा ने कहा कि उसे अंदर ले आओ, कुछ खाने को दो, कुछ गर्म दो, जब तक इस खोए हुए बच्चे के लिए मैं ढूंढता हूँ कि किसका बच्चा है, देखता हूँ क्या करता हूँ. Father, cried Betsy, do not make her come into the hot room. She cannot live unless she breathes the cold air. Nonsense, said the father. Run indoors. Tears into their eyes, Betsy and Peter moved the board on wheels into the warm parlor. Their father went out, but he had hardly reached the gate when the scream of Betsy and Peter brought him back. The mother ran to them down the stairs. अब वो बाहर जा ही रहे थे, इतने में दोनों बच्चों ने जोर से चीख लगाई, जोर से चिल्लाए. What is the matter, children? They asked together. Our little snow sister is thawed. Children, here the meaning of thawed is when we bring something frozen and it starts melting gradually, very slowly. The word used is thawed. You can also use this word when you take out something from deep freezer, from your refrigerator. Thawed. And the father, not understanding anything, inquired, where has that little girl gone? And what a quantity of snow you have brought in here. अभी भी पापा को समझ आया नहीं कि एक्चुअली वो कोई सच की लड़की नहीं थी, बल्कि एक स्नो गर्ल थी जो अंदर आने की वजह से, गर्मी की वजह से मेल्ट हो चुकी थी. The mother of the children had understood everything till now. They made a snow figure that melted in the warm parlor, she said. So आखिरकार ममा को सब समझ आ गया कि वो एक सच की लड़की नहीं थी, एक स्नो गर्ल थी जो अब मेल्ट हो चुकी है. So children, through the story of the snow girl, I hope you also understood the entire process of snow and its melting in a wonderful manner. Do read this story again, revise the new words learned, and attempt the book exercises.